नाउ आई वांट टू वर्क विद द डेटाबेस। मतलब क्लाइंट से डेटा आ रहा है, ओके मैंने अभी तक क्लाइंट में अच्छे से व्यूज नहीं बनाया, बट दैट विल बी द फोर्थ स्टेप। ओके सबसे पहला स्टेप था मेरा एक्चुअली हाउ टू कॉन्फ़िगर द Django और हाउ टू इंस्टॉल द Django। सेकंड स्टेप इज how to create your first view. Now third step is to work with the database. Okay, so what is my next requirement? My next requirement is, sir, I want to just work with the database in the sense I want to create the DB and want to configure the database with my Django application. But guys, like by default, Django provides one thing that is actually by default Python provides one thing that is SQLite tree. So आप एक बार देखो यहाँ पे, like जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरा ये first project है, inside that we had actually three things: first project, quiz app, and managed document. So how this db.sqlite3 was created? ये किसने create किया? So guys, and the file size is 0 का भी मतलब it's an empty. Okay, this is nothing but an empty file. तो ये किसने create किया? तो by default जब आप first time server को run कर, then automatically they just create the database. Okay, and in the case of Django, so in the case of SQLite3, in the case of SQLite3, like file name and database name will be same. Okay, so you don't have to worry about that. Automatically उसने इसलिए बना दिया because file name and database everything are same in case of SQLite3. Okay, in the case of SQLite3 or not in other case. Okay, so now the next thing is database was already created, but what is my requirement? Sir, इसके अंदर क्या है? That is empty. तो अगर ये empty है, अगर ये empty है, then मुझे इसके अंदर कुछ data add करना है. तो guys, by default, अब हम लोग को अगर मान लो database पता ही नहीं है तो consider मुझे database में कुछ भी नहीं पता. So what to do? So if you are not familiar with the database, then just create a model class, and Django will map this model class with DB. Django will map this model class with the DB. Let me just explain this. So what do you mean by model class? So consider, मान लो मुझे एक book का data store करना था. मुझे book नाम का मेरे पास एक कोई entity था और कुछ मेरे पास मुझे book नाम का एक table बनाना था और उसके अंदर कुछ columns होने चाहिए like book ID, book name and book price. Three things are required. Okay, मुझे ऐसा कुछ चाहिए था. So what you have to do, guys? You have to just define the class name book. Okay, जो आप class का जो भी नाम रखोगे, it will be a table name. It will be a table name, and inherit that is from the models class. ओए, models class कहाँ से है? It is from model submodule from the Django. Okay, so what you have to do? यहाँ पे थोड़ी dependency है. It is tightly coupled. आपको अपना खुद का क्लास बनाना है जिस नाम का आपको टेबल बनाना है. टेबल का नाम मुझे चाहिए था बुक, तो मैंने क्लास का नाम रखा बुक, एंड जस्ट इनहेरिट दैट फ्रॉम model.models. नाउ आपको उसके अंदर क्या क्या चीज चाहिए? सर, आई वांट आईडी, आई वांट बुक नेम, एंड आई वांट बुक प्राइस. तो मुझे तीन चीज की जरूरत है. गाइस, जस्ट डिक्लेयर थ्री क्लास वेरिएबल्स इनसाइड दिस क्लास. तीन क्लास बनाइए एंड स्पेसिफाई द डेटा टाइप. सर, पाइथन तो डेटा टाइप सपोर्ट ही नहीं करता. सो गाइस, पाइथन डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता, बट यू हैव टू जस्ट यूज like the Django models dot something data type. Okay, so you have to just write down ये जो models लिखा उसके data type आपको यहाँ लिखना है. जैसे मुझे इसको integer चाहिए था, so integer field. Okay, so मुझे यहाँ पे actually book नाम मुझे character field चाहिए था, so character field, and here I required like a float field or numeric field. Let I just say integer field. Okay, this is not a perfect thing. मैंने actually हर एक चीज accurate नहीं लिखी. Okay, but just write down, just create three variables. Just create three variables. But ये integer field, character field और integer field कहाँ से आया? So guys, to observe one thing, आपने अपना class कहीं से inherit किया हो, तो inherit करोगे तो आपको कुछ gift मिलेगी, तो मैंने वो gift use. Okay, that is that. Our task is done. Sir, but table कहाँ बना? Columns कहाँ पे बनी? वो सब Python automatically, sorry, वो सब Django automatically करेगा. But कब करेगा? So for that we have to just fire some commands. So let me just go through this thing. So what is our requirement? Now I want to create a database for my project. Okay, and one more thing, let me just open this settings.py file. We have some predefined application installed in our project. देखो, मैंने अपनी application, हम लोगों ने जो अभी थोड़े टाइम पहले का जो सेशन कंप्लीट किया, okay, how to create a first view in a Django. So in that we just create a quiz app नाम का हमने एक application बनाया था, and we declared that application inside that installed app list. Okay, so यहाँ हमने डिक्लेयर किया था, but we have something more over here. हमारे पास कुछ और चीजें भी अवेलेबल है. What about that? This is admin application, this is auth application, content type application, sessions application, messages application, static files application.
ओके मतलब ये सब प्रीडिफाइंड एप्लीकेशन, यस दिस आर द गिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम द रीजन। ओके सो अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए यू कैन जस्ट कमेंट इट। ओके बट इन सब में भी इंटरनली बहुत सारा डेटाबेस यूज होता है, इन सब भी एप्लीकेशन में भी इंटरनली बहुत सारा डेटाबेस यूज किया। तो जस्ट इग्नोर कि हम लोग अभी डेटाबेस नहीं बना रहे बट हम प्रीडिफाइंड डेटाबेस यूज कर रहे हैं। We are just want to use a predefined database. Okay, so what you have to do, just you have to just let me just follow these steps, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया इसमें से। So how to work with the database? So guys, first thing is just open your application and open your project name, and from that settings.py. So here we have, okay, here we have settings.py. Now inside that you have to just okay, 1 minute. Where is the DB? Yeah, here it is. So you have to just check this variable. Okay, inside that we have to just check this variable. So that is database variable. So जैसे मैंने आपको by default बताया कि Django में by default SQLite 3 connected है, SQLite 3 connected है। कैसे पता चला? मुझे नहीं चाहिए SQLite 3. I want to use MySQL. I want to use Oracle. I want to use PostgreSQL. So guys, if you want to connect your Django application with some another, like not Django application, Django project with some another database, then guys what you have to do, you have to just open the settings.py. ये settings.py मुझे कहाँ पे मिला था? सर आपको ये अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का जो फोल्डर था, inside that first project, inside that there is a settings.py. Just open that thing and change the configuration. So what is the default configuration? कि अगर कोई database specified नहीं है, then engine name that is SQLite 3 and database name is actually DB SQLite 3. जैसे मैंने आपको बताया था कि by default database का नाम भी DB SQLite 3 होगा। ओके एंड हमने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की थी कि यहाँ पे हमारी फाइल का नाम भी DB SQLite 3। ओके तो इस फाइल के अंदर वो एक्चुअली डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये सब सेटिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट चेंज। ओके सो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन जस्ट मॉडिफाई। सो लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस वन, open this file settings.py. now it's a normal Python file, module instance file, okay, with module level variables representing actually Django settings. Okay, so what it has, actually it has some variables. Just go through this one. जैसे हमारे पास अभी पहला वेरिएबल है डेटाबेस। सो हम लोग जनरली वेरिएबल कैसे बनाते हैं? लाइक a नाम का वेरिएबल मुझे बनाना है तो मैं पाइथन में कैसे बनाऊंगा? a equal to 10, so it will be the type of integer. a equal to 20, so it also will it will be the type of integer. But अगर मैंने ऐसा लिखा a equal to welcome, it will be the type of string. So यहाँ पे डेटा लाइक C लैंग्वेज C++ की तरह वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता, लाइक इंटीजर a and something like that. आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है, equal to you have to set some value. So this is Python dictionary. Database is actually Python dictionary. जैसे चेक करो यहाँ पे curly brackets है. Okay, but generally dictionary के अंदर key value pair होता है. So this is the key and ये उसका value. तो value में वापस actually dictionary. तो dictionary के अंदर dictionary. Okay, and in sub dictionary actually key is engine and value is actually SQLite 3 and name is also key and this is the value. Now what about this base dir? So guys base dir नाम का पहले एक वेरिएबल बनाया हुआ, just check. Okay, base dir. So ये क्या करेगा? ये फाइल कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? सर ये फाइल एक्चुअली फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर है, तो पहले उसका पाथ फाइंड आउट करेगा और उसके पेरेंट में जाएगा, उसके पेरेंट के पेरेंट में जाएगा। in short at anyhow in this location. Okay, यहाँ पे पहुंच जाएगा। So it just represents the path. So I hope that's clear. Okay, so now we have to just open this file. Now by default the configuration uses the SQLite 3 as we just gone through that one. Now SQLite 3 included in Python by default. Okay, so we have not to install any another software to support this SQLite. Now if you want to choose another database, then we have to just change that. Okay, हम लोग को configuration change करना है. So now install the appropriate database bindings and change the following keys in the database default item. So what you have to change? So first thing we have to just change this engine name. So मान लो मैं use कर रहा हूँ PostgreSQLite, then PostgreSQL, then मुझे engine में SQLite 3 की जगह मुझे ऐसा लिखना है django.db.backends.postgres. Okay, अगर मैं MySQL use कर रहा हूँ, then I have to just use MySQL. अगर मैं Oracle use कर रहा हूँ, then I have to just use Oracle. I hope that's clear. Okay, so यहाँ पे changes करना है. Now here you have to just provide the database name. यहाँ पे आपको database का नाम लिखना है. Okay, so what about name? It's nothing but in database name. So by default it's a DB SQLite 3. But guys, अगर आप MySQL use करते हो, तो आपने database का नाम क्या रखा है? Like हम लोग generally command fire करते हैं, create database name. So whatever the database name, you have to specify the database name. So that's the configuration. But in MySQL, in Oracle, in PostgreSQL, we require some more configuration. जैसे कि username, like port number, password, we require some more things.
ओके सो वो सब चीजें कैसे स्पेसिफाई करें? सो गाइस यू कैन जस्ट डू दिस थिंग, यूजर नेम लाइक होस्ट और पासवर्ड एंड एटसेट्रा थिंग। सो अगर SQLite 3 की बात करिए तो दिस इज योर डिफॉल्ट सेटिंग, बट अगर आप Postgres की बात करते हो देन you have to provide all these things by using this keyword arguments. Okay, so engine and name हम लोग को पता था, but whatever the username, whatever the password is there, whatever the host name is there, and whatever the port number is there, जहाँ पे आपका MySQL launch है, consider मेरा django मेरे इस कंप्यूटर में चल रहा है and MySQL actually remote कोई सिस्टम पे चल रहा है, कोई सर्वर पे चल रहा है, then just provide the IP address over here, that is your host, and उसका पोर्ट नंबर मान लो 3302 है, then just specify the port number over here. ओके सो आपको वो सब कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर मान लो आप कोई भी डेटाबेस इसके साथ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, just do one thing, django plus MySQL, just write down django plus MySQL, just provide all the keyword required arguments, all the required keyword arguments. Just use that keyword arguments to configure that particular database with the django. So I hope that is also clear. So how to configure this thing, and what about this database variable? So this database is variable. It's a variable name. It's a variable name. Okay. So what about this database is variable? So this variable it just represents the configuration of the database with which actually your django will connect. Okay. So by default is SQLite. By default it is actually SQLite. So now next thing is, up to this I hope that there is no problem. Now one more variable is there, that is time zone. If you want to modify that, then you can guess. Where is the time zone? Let me just search. So here we have, so by default it is UTC, universal time zone. It is universal time zone. So if you want to modify that, then you can modify this. Okay, so you can just modify this time zone. By default is actually UTC, in short American Chicago time zone. American Chicago time zone is there. So यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है मैंने हर एक, मतलब विकिपीडिया पे सब टाइम जोन है, आपको जो भी चेंज करना है यू कैन जस्ट चेंज दैट एंड लाइक पास द कोड ऑफ दैट. ओके, वो यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इन शॉर्ट मीन टू से settings.py के अंदर सबके सब वेरिएबल्स है जो पूरे django प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठे हुए. अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे तो django में चेंजेस आ जाएंगे, मतलब आपको प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ जाएंगे. नाउ वन मोर वेरिएबल इज देयर, दैट इज इंस्टॉल्ड ऐप. जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इंस्टॉल्ड ऐप. So we have this much of installed application. Quiz app हमने हमारा लिखा था, but we have this much of actually predefined applications which is already installed. जैसे कि admin, auth, content type, sessions, messages and static files. These are the by default things. And actually हम लोगों ने start किया था अपना ये session actually database के साथ deal करने. So guys, ये सब के सब project by default internally DB use करते हैं. Okay. So what is my requirement? अगर django में आप काम करते हो, then your database will be in the form of models. Your database must be in the form of models. उसको मुझे database में convert करना. So right now consider I have no idea how to write down the model, और मैं अपने application का खुद model नहीं लिखना चाहता. Right now मुझे सिर्फ check करना था how to convert this model in a database. मुझे सिर्फ ये learn करना था how to convert model in a database. I have no idea how to write the model. So पहले मुझे predefined models चाहिए. तो predefined models किसके पास से मिलेंगे? Installed application के पास से. So installed application हमारे पास है. So yes, we have some installed application. So here we have some installed application. And internally they uses the models. Models in the sense what? They need databases to convert, otherwise to execute themselves. They need database. Okay. So उन्होंने database के लिए खुद के पास क्या लिखा हुआ है? They have model classes. So I want to convert that model classes. I want to convert that model classes in a DB. So let me learn the steps to convert the model classes in a database. Okay. So what we have to do? Just fire this command, manage.py and migrate. Manage.py and migrate. Before that, let me just go with the properties of this db.sqlite3. It is actually 0k. Size of this one is actually 0k. So now what I will do, just open the command prompt. अगर आपने already open कर रखा है, then just use that and type manage.py and migrate. Manage.py and migrate. Oh, it performs some task. Okay, उसने कुछ type perform किए and उसने कुछ यहाँ पे मुझे बताया भी कि migrations apply हुए हैं किनके ऊपर? Admin, auth, content types and sessions. But ये सब आया कहाँ से? So guys, all are nothing but an installed application of your project. So admin, auth, content types and session, ये चार के ऊपर apply. But sir, actually we have 6 predefined applications and quiz app, total 7 applications. So guys, जैसे quiz app में हमने models नहीं बनाया था, in the same way messages और static file के अंदर models नहीं है. Messages and static file के अंदर models नहीं है. So we have model in this 4 application. ओके, तो उन्होंने इसको माइग्रेट किया. माइग्रेट करना मतलब चेंज करना. सो मॉडल टू डेटाबेस कन्वर्जन हुआ. ओके, सो दिस मच ऑफ थिंग्स विल बी क्रिएट. इतनी सारी चीजें क्रिएट हुई.
कंटेंट टाइप्स के अंदर एक इनिशियल फाइल, ऑथ के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, काफी सारी चीजें क्लियर हुई. नाउ लेट मी जस्ट चेक द साइज ऑफ दिस. ओह नाउ इट्स 128 KB. This go through this one. db.sqlite3 is right now 128 KB. So अब database बन गया guys इसके अंदर. Okay, so you have not to worry about the database. आपके पास अगर model class है, then you have to fire a simple command. That simple command is actually manage.py migrate. What it does, it just convert the model. It just convert the model into what? It just convert the model, but into what it converts? Into database. Okay, so just do not worry about this thing. Okay, so अगर model to db करना है, then we have a command that is actually manage.py and migrate. But sir, अब model कहाँ से लाए? So let me just learn how to define the model. Okay, so is it clear to everyone? यहाँ तक कोई doubt? So हम लोगों ने सिर्फ एक command learn किया है. अगर आप database के साथ work करना चाहते हो, then guys you must have a like model classes. And if you have model classes, then just fire this command. So हम लोगों ने command run करना सीख लिया. Now how to create a model? How to create a model? So for that, just open the models.py from your application. So what's my application name? That's quiz.app. Now by default, one file is there, that is models.py. Okay, just open that. Just open this file. So that's an empty file. Just consider only one like the import statement is there. Otherwise, it's empty. Let's just open that, and as per your requirement, just create classes. And okay, मैं right now यहाँ पे सिर्फ ये paste कर रहा हूँ. तो थोड़ी देर में explain करूँगा आपको. So what I did, मैंने अपने खुद का class बनाया. Consider as per my requirement, class requirement. Sorry, for application requirement, the class name must be a question. तो मैंने question नाम का class बनाया और उसको मैंने inherit किया actually models.models. उसको मैंने inherit किया models.models, जैसे आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले. Okay, उसको मैंने inherit किया models.models से, और उसके अंदर कुछ variables बनाए, question text and publication date. अब आप अपने variable का नाम कुछ भी रख सकते हैं, but यहाँ जो variable का नाम लिखा, it will be a column name. Okay, so जो question लिखा, it will be a database, it will be a table name, and अंदर जो चीज लिखी मैंने question text and publication date will be a column. But अगर आप database जानते हो, then column के साथ-साथ मुझे उसका data type भी देना पड़ता है. So question text उसका data type है character field. Publication date उसका data type date time field. Okay, so now now what about this classes character field or date time field or foreign field, foreign key or integer field? What about this classes? So guys, ये सब classes SQL के columns का data type provide करने के लिए हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में learn करेंगे. But some classes require some mandatory arguments. जैसे कि आप character field की बात करें तो maximum उसको कितना data store करना. तो कोई भी क्वेश्चन 200 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए. So this is the mandatory. आपको उसका लेंथ लिखना पड़ेगा, कंपलसरी लेंथ यू हैव टू कंपलसरी स्पेसिफाई, दैट इज मैक्स लेंथ इक्वल टू 200. ओके, एंड ये वैलिडेशन के लिए भी काम आएगा कि 200 से ऊपर अगर आप डेटा एंटर करने की ट्राई करोगे then it will generate the error. So what I did, I just defined my class. Let me just define another class, test, and just inherit that class from models.model. So inside that, what is our requirement? So मुझे actually test के अंदर रखना था नाम. Okay, so name is equals to models.character field, and character field required one mandatory argument, that is max length. So just specify मुझे नाम maximum कितना रखना था, 40 का. Now I required password. So password field is also there. So models.password field. Okay, so sir, the question is, sir, ये सब field के नाम मुझे कहाँ से मिलेंगे? So we will just list out all the name of this like available data types, जैसे कि character field, password field, ये सब list out कर देते हैं थोड़ी देर में. But right now just ignore that. Now I want actually like a mobile number or pin code number. So for that I will just write on model field dot integer field. Okay, dot integer field, and it doesn't require anything. उसको कोई argument देने की जरूरत नहीं. But you want कि सर इसका default value कि मान के चलते कि सब बंदे सूरत के लिए. So मैंने by default यहाँ पे पिन कोड रख दिया कि अगर कोई पिन कोड नहीं रखता then the default value actually 395.1. Okay, so in this way guys, you can just create your model class. What you have to do, you have to define the class, inherit that class from the models.model, and list out the variables required. Okay, जितने भी variables की जरूरत है, just list out all the variables and सबका data type fix कर दीजिए. Okay, so just let me go through this one. So yeah, I hope आपको ये दो चीज समझ में आई. Now I have one more class, that is choice. Okay, so मुझे एक दूसरा टेबल चाहिए, choice ना, जिसके अंदर मुझे field चाहिए था choice text and words.
Okay, so choice text will be a character type of field and what will be an integer type of field. And by default value of this by default value of this words is actually 0. मुझे उसको 0 रखना. This is optional. अगर नहीं रखना चाहते तो भी चलेगा. Okay, so by default value कुछ भी नहीं है. So मुझे default 0 रखना. Now मुझे ये दोनों टेबल को कनेक्ट करना था by using the foreign key. So what I did, मैंने ऐसा लिखा question is equals to models.foreign key in the bracket question. What about this question? This is the class name. आप ये question का नाम कुछ भी रख सकते हो. That's ABC. You can just write down anything. But what about this question? It's actually a class name. Okay, and this is the cascade option. So अगर आप SQL से familiar हो तो foreign key में ऐसा कुछ होता है कि अब दो टेबल कनेक्टेड है. If two tables are connected, एक टेबल में अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करो तो दूसरे टेबल में ऑटोमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑन डिलीट कास्केड, मतलब डिलीट ऑपरेशन में कनेक्शन है. मतलब किसी ने अगर क्वेश्चन डिलीट किया then this thing must be deleted. ओके, इसका यहाँ पे जो एंट्री है वो डिलीट हो जाना चाहिए. ओके, और उसका हमने नाम रखा है क्वेश्चन. उसका हमने नाम रखा है क्वेश्चन. That's it. So now the thing is my model class is ready. My model class is ready. Now what is my next requirement? मैं model class लिख चुका, अब मुझे उसको actually database में convert करना. So should I have to write down this manage.py.migrate? मुझे ये लिखना चाहिए. Yes, we have to just write on that thing. But before that, let me just create a script also. Script मतलब सर ये जो model.py हमने लिखा, मुझे उसका Python script चाहिए. Convert कैसे करता है? I'm little bit of curious. Okay, मुझे वो चीज भी चाहिए तो कैसे convert करेगा? So guys, for that we have to just fire the command, and that command is actually make migration. Okay, make migration. So what I have to write down, we have to just write down manage.py. We have to write down manage.py, make migrations, and your application name. So my application name is actually QuizApp. So just pass this command. It will create two models. Just check. उसने दो चीजें बना दी. Questions it creates, and one more that is choice. And one more thing, guys, इसने मुझे एक चीज बताई कि ये सब कहाँ पे create किया. So inside the QuizApp folder, there is a make migration folder. Inside the QuizApp folder, there is a migration folder. Inside that one file is there. Let I just open that. So inside the QuizApp folder, there is a migration folder. Oh, now one file is there. Let me open this file. Okay, so it just create a migration class here. And inside that, it just create the first name that is question and second name that is choice. Okay, so ये मैंने script generate. अब जब हम माइग्रेशन कमांड फायर करेंगे ना तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी और टेबल्स बन जाएगी. ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी और टेबल्स बन जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तो मुझे सिर्फ डायरेक्टली मुझे माइग्रेट करता. अगर मैं डायरेक्ट माइग्रेट करता तो डायरेक्ट टेबल बन जाते. मतलब मेरा जो मॉडल, मेरे पास जो मॉडल था उसका डायरेक्ट डीबी में कन्वर्जन हो जाता. बट आई डू नॉट वांट टू कन्वर्ट इट डायरेक्टली. मुझे चेक करना था कि भाई पहले मुझे बता तो क्या क्या करने वाला है. ओके, सो मेरे मॉडल के पास क्या क्या चीजें थी, मेरे मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें रखी थी. सर आई हैव टू क्लासेस, क्वेश्चंस एंड चॉइस. So here I must have two class. So create model के अंदर एक question है and create model के अंदर एक choice है. That's it. Name is same. अगर still आप नाम change करना चाहते हो, just modify this. Okay. And one more, उसके अंदर question के अंदर दो चीजें थी, choice के अंदर मेरे पास तीन वेरिएबल. So question के अंदर मेरे पास कोई दो थे, यहाँ तीन है. And choice के अंदर मेरे पास तीन थे, यहाँ चार है. So guys, by default just check this. ID नाम की एक चीज by default create. Okay, so that is actually primary key. हर एक टेबल में प्राइमरी की जरूरत होती है जो बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट करता है. दैट इज ऑटो क्रिएटेड ट्रू. ओके, सो बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट करता है. आप इसको ओवरराइड कर सकते हो. ये सभी प्रॉपर्टीज को आप ओवरराइड कर सकते हो. दैट्स अप टू यू. ओके, हर एक प्रॉपर्टी को आप ओवरराइड कर सकते हो. दैट इज अप टू यू. ओके, सो ये भी देखेंगे हम लोग इन फ्यूचर. बट दिस इज द आउटपुट ऑफ मेक माइग्रेशन. दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कमांड मेक माइग्रेशन. नो दैट्स दैट. हमने अपनी पाइथन स्क्रिप्ट जनरेट करके एक बार देख लिया कि हाउ इट लुक्स. Another thing is now I want actually SQL script of that. Okay, अब मुझे उसका SQL script. Okay, so what I will write down, I will just write down manage.py. After that SQL migrate. But sir ये कितने कमांड याद रखें? Just press enter, you will have a list of commands. Okay, so हम लोगों ने start application command देखा, start project command देखा, हमने make migration देखा, migrate नाम का command देखा. Now I want to go with this SQL migration. Okay, so manage.py SQL migrate. Now what is your app name? Sir, my app name is QuizApp. My application name is QuizApp. And ये सब migration कौन सी फाइल में हुआ था सर? 0001 में. ये सब migration कौन सी फाइल में हुआ था? It is inside the 0001. Just press enter. Okay, so guys, after this it will fire this command: create table QuizApp underscore choice.
squeezapp underscore choice. Inside that id integer not null primary key auto incremented. Choice takes is it, I hope आप लोग को समझ में आ रहा है. This is nothing but an SQL code. This is nothing but an SQL code to create the table. Okay, so यहाँ पे मेरे पास पहला table create होगा, that will be the question, and here it creates another table that is nothing but a choice. Okay, so अगर आप SQL migrate लिखते हो, that means what? I want an SQL script. I want an SQL command. I want an SQL script of my model class. Okay, so for that what I did, सबसे पहले मैंने उसका Python script बनाया and SQL migrate की मदद से मैंने उस Python script को SQL script में convert किया. Okay, it will not save, तो सिर्फ display करता है, save नहीं होगा. Okay, तो इस फाइल में जो भी Python script है उसको मुझे SQL script में migrate करना, migrate in the sense करना. Okay, so that's that. So इस तरीके से कुछ work करने वाला है. So now let me run this. So run करने के लिए मुझे क्या लिखना है? manage.py make migration. Sorry, mh.py migrate. Okay, so let me just go through one more step. ये हो गया सब कुछ. Okay, ये आउटपुट अलग-अलग आ सकता है, ये आउटपुट अलग-अलग आ सकता है. That's up to your database. Okay, that depends on the database. Now, finally, just run this. Manage.py and migrate. Manage.py and migrate. That's it. So what will happen? जो भी changes आपने किए थे, now just check. हमारे पास पहले 4 नाम आ रहे थे, अब यहाँ पे मेरे पास 5th नेम है, that is squeezapp. Okay, हमने स्टार्टिंग में जब कमांड रन किया migrate manage.py migrate, then we have actually only 4 application names. Why? Because actually we have 7 applications in settings.py. So let me just open that settings.py. So here we have actually 7 applications, but output में 4 नाम क्यों आ रहे थे? Because only 4 applications having a model class. only 4 applications having a model class. Okay, so अभी मैंने actually अपने application के अंदर में model class add कर दिया, that is squeezapp. उसके अंदर में मैंने add कर दिया. So now यहाँ पे जब migrate लिखेंगे तो अपने पास 5 चीज बन जाए. Okay, and in SQLite 3, in this SQLite 3, we have actually 5 different things. Now 128 KB का उसकी size हो गई 140 KB. Okay, so it will be by default added. In short, mean to say कि अपना database create. Okay, so finally आपको सिर्फ इतनी 3 चीजें लिखनी. Change your models. Model के अंदर change करिए. Okay, and make migration command fire करिए, and after that migrate command fire. That's it. So conclusion is only 3 things we have to do. That's only 3 things we have to do. Nothing else. So is this clear, guys? Is there any problem?